standard. Today we are starting the chapter number 1 of 12th standard, and that is solid state. As all of us we know that there are the many objects which we see in our surrounding that is present in the form of solid one state, and that's why it is becomes very important to study about the solid state. What type of a binding force is present in between the constituent particles of a solid state, how many type of solids are present, and what is the difference in between these types, basically what type of arrangement is present in these different types, so that we can categorize further a solid into different categories. So if we are talking about the solid state chemistry, so generally the science of detailed study of structures. ठीक है बच्चे, क्या? The science of detailed study of structures um, is known as solid state chemistry. इसी को कहेंगे हम, और solids and their properties, मतलब कि अगर हम वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स की, सॉलिड स्ट्रक्चर्स की बेसिकली डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ यूज हो रही है, और व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर देयर इन देयर प्रॉपर्टीज, that we are going to study under the solid state chemistry. And as all of us we know that gases and liquids have fluidity, means there is no specific arrangement of constituent particles. The binding force in between the particles, uh, two particles, that is also a lesser one, or we can say the weaker one, whereas comparatively solids have definite and systematic arrangement of ions or molecules. So in this one chapter we basically focus on the arrangement of atoms or ions, ठीक है, and their relationship with their properties. Okay beta, and the changes which we can make in these properties. तो हम इन्हीं के बारे में डिटेल्ड में फर्दर इसके स्टडी करेंगे, जिसमें कि first one topic we are going to study, or we should know about that, that is the general characteristics of solids. तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स की, so the solids have definite mass, volume and shape. The distance in between the mm, intermolecular distance, which we can say means this distance in between the constituent particles of solids, that is also very short, very close with each other. And because these intermolecular or these constituent particles are very close with each other, that's why we can say the forces which is exist in between these constituents, that is also strong enough, yeah, highly strong. The constituent particles which is present that have fixed positions, बेटा अगर आप यहाँ पे देखो तो इनकी fixed position है, like here it is, down this one, in this one we you can say, so इनकी positions कैसी हैं, fixed है, and due to which the, they can just oscillate about their mean पोजीशंस. तो ये अपनी पोजीशंस में क्या कर सकते हैं, जस्ट ऑसिलेट और वाइब्रेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू another one, and because of which the solids are rigid in nature, as well as these are incompressible, because there is no space, or we can say no gap is present in between the constituent particles of solids. ठीक है, so these are the general characteristics of solids. If we are talking about the the branch of physical chemistry,
which deals about the structure and properties of solids, as I already told you, that is known as the solid state chemistry. And we can categorize a solid into two different types, that is crystalline and amorphous solids. Now, one by one, we are going to discuss about both these two types. So we can say that we can divide an solid into two types, that is amorphous and crystalline. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि amorphous solids जो होते हैं, that is the amorphous or crystalline solids that we can categorize on the nature of order present in arrangement of their constituent particles, means किस तरीके से वो present है. तो अगर हम crystalline solids की बात करते हैं, as I already told you that these consist of basically a large number of small crystals. तो छोटे छोटे क्रिस्टल जो हैं वो मिल करके आपका क्या बनाएंगे, एक बड़ा क्रिस्टल बनाएंगे, और जिनमें से हर एक की जो होगी वो अपनी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी, अपनी शेप होगी. एग्जाम्पल की अगर वो एक टेट्राहेड्रल है तो बहुत सारे टेट्राहेड्रल फिर एक पॉलीहेड्रल बनाएंगे, एंड देन दे आर फॉर्मिंग अ वन क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. So in a crystal, if we are talking about, then the arrangement of constituent particles. Now, constituent particles can be molecules, atoms, or ions. That should be the ordered one. ठीक है. It has long range order. Long range order का मतलब होता है कि बेटा regular pattern है जिसका, वो अपने पैटर्न को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है आफ्टर अ शॉर्ट टाइम या आफ्टर इन द एंटायर क्रिस्टल. तो वो एक रेगुलर पैटर्न जो होगा वो क्या हो रहा है, अपने आप में रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली, बार बार वही पैटर्न आ रहा है. अगर ऐसा पैटर्न आता है तो सच सॉलिड्स आर नोन एज द crystalline solids. Basically these solids are anisotropic in nature. ठीक है. ये इसका मतलब होता है कि कुछ इनकी जैसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी, लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या आपका थर्मल एक्सपेंशन है. सो ऑल ऑफ दीज वैल्यूज दैट इज हैविंग अ डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल. एज यू कैन सी हियर इन द फिगर, ये एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें कि दो डिफरेंट टाइप के आयंस प्रेजेंट है, एक ब्लू कलर में है और एक पिंक कलर की रिंग में है. तो अगर मैं इस क्रिस्टल को CD की डायरेक्शन में कट करती हूँ तो आई विल गेट द अरेंजमेंट ऑफ पिंक कलर, देन ब्लू कलर आयंस, देन पिंक कलर रिंग, देन ब्लू कलर आयंस, देन अगेन पिंक कलर, then blue color. Means two different ions या two different element present in a molecule, उसका arrangement होगा. लेकिन same अगर हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बी ए डायरेक्शन में या ए बी डायरेक्शन में, तो जो सेटिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है वो कैसा आ रहा है, या तो वो ब्लू कलर क्रिस्टल्स आ रहे हैं या रेड कलर की रिंग्स आ रही हैं. कहने का मतलब या तो वो एक आयन आ रहा है या दूसरा आयन प्रेजेंट इन अ आयनिक क्रिस्टल आ रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन कि ए बी डायरेक्शन और सी डी डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, वो डिफरेंट डिफरेंट है. So the values will be also different when measured along the different direction, and such a property or such a nature is known as anisotropic, which basically arise due to the different arrangement of particles in different direction. Okay. Now, because of a different arrangement of particles along the different directions, value of same physical property is found to be different along each direction. एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो अलग अलग वैल्यू दे रही है. लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बी ए डायरेक्शन, सो फिजिकल योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सच अ क्रिस्टल इज डिफरेंट, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट और स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स along CD direction, then it will be the different one. Crystalline solids apart from, whereas हम पहले amorphous को भी साथ साथ कंपेयर कर लेते हैं. So amorphous solids on the other hand are isotropic in nature. What does that mean? That their physical properties values remains same. Why? Because the order
is a very short range order, or we can say it is not long range order. ठीक है, अरेंजमेंट जैसा है, कैसा है इसके अंदर, इर्रेगुलर इन ऑल डायरेक्शंस है. So such solids, these are amorphous in nature. ठीक है, कैसे कैसे हैं. फर्स्ट वन, these are short range order, these are isotropic in nature. क्यों उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, रीजन बीइंग क्योंकि उनकी सेटिंग ही नहीं है. उनका जो स्मॉल क्रिस्टल है वो भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए शॉर्ट रेंज है. और जब रेपिटेशन ही नहीं हो रहा तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं हो रहा है. In comparison to that, crystalline solids having a very sharp melting point. वो obviously बेटा आपका जब एक जो arrangement है of particles, constituent particle that repeat itself after a fixed pattern, so obviously that should be having a sharp melting point, higher heat of fusion, whereas amorphous solids soften over a range of temperature. ये क्या होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये एक रेंज को फॉलो करते हैं और इनको मोल्ड और ब्लोन किया जा सकता है किसी भी शेप के अंदर. फॉर एग्जांपल आपका ग्लास जो होता है दैट इज कम्स अंडर द amorphous solid, क्योंकि उसकी शेप आप मोल्ड करके कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो. एक ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, that after heating amorphous solids we can convert it into crystalline at particular temperature, or we can say at some temperature. For example, जो glass objects होते थे from ancient civilization, that has to be found milky in appearance. ये आपकी because of some crystalline नेचर, धीरे धीरे वो हीट अप होकर के क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं क्रिस्टलाइन में. amorphous solids की टेंडेंसी जो होती है वो फ्लो करने की होती है, and that's why these solids are also known as supercooled or pseudo solids. Means they have the tendency to flow, and solids do not have the tendency to flow, so that's why they are known as the pseudo solids, means false solids. कैसे सॉलिड्स हैं, फॉल्स सॉलिड्स हैं, या जिनको हीटिंग करने पे दोबारा वो क्या हो जाते हैं, आपका सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मोल्टन फॉर्म में आते हैं, आफ्टर दैट अगेन इट कन्वर्टेड इनटू what solid form. We can say or discuss about the crystalline solids property. So the first one, building constituent, the constituent particle arrange themselves in regular manner through entire three-dimensional network. Second one, इसके अंदर crystalline lattice exist करता है. Crystalline lattice क्या होता है बेटा, that is a solid figure which has a definite geometrical shape with flat faces and sharp edges. ठीक है, incompressible orderly arranged units होते हैं, as I already told you that the very lesser gap in between the constituent particle, and that's why it's almost these solids are incompressible. They have a definite sharp melting point because of their again repeated regular pattern. We have such solids are anisotropic in nature because of different physical properties, values at different directions, definite geometry because of regular pattern, and these can give X-ray diffraction bands, and sodium chloride, cesium chloride, etc. are the examples of crystalline solids. Whereas if we are talking about amorphous solid, as I already discussed with you, these particles are of irregular shape, as you can see here in the figure. यहाँ पे देखिए ये first one, A figure is of a crystalline solid, whereas if we are talking about it basically quartz है और ये quartz silica है quartz glass है, sorry, I am now in this one quartz glass में अगर आप देखो तो पैटर्न अपने को कहीं पर भी फॉलो नहीं कर रहा है. यहाँ देखिए, यहाँ पे different pattern है, you can see here it is different, whereas if you can see here in crystalline solids if we are talking about, then the pattern repeat itself. यही same pattern जो है आपका क्या कर रहा है, अपने आप को this pattern is repeating itself again and
अगेन ये एक स्मॉल यूनिट है जो कि अपने को रिपीट कर रही है here, this one as well as in this one, whereas in quartz glass may it is not repeating. So such a solids like quartz glass is a amorphous solids where these has a short range order, क्योंकि देखो यहाँ पर तक कुछ अलग structure था, यहाँ पर तक, then here it is showing a different arrangement of particles, then in this one pattern it is showing a different pattern. ठीक है, so ये short range order होते हैं, and uh, uh, in such an arrangement a regular and periodically repeating pattern is observed only for a short distance. Such portions are scattered, and in between the arrangement is disordered. Okay, so if we tell about the important points or the main characteristics of amorphous solids, so this is derived from the Greek word that is amorphy, which is meaning shapeless. These are not having any regular but haphazard arrangement of atoms, or we can say molecules. These are also known as a non-crystalline solids or supercooled liquids or pseudo-solids. These do not have any sharp melting point. Instead of that, that is, these having a uh, range of temperature that gradually soften. These are isotropic in nature, means showing the same values of physical properties. These do not have any definite geometrical shape. These type of solids do not give X-ray diffraction bands, and the example of amorphous solids are glass, rubber, plastics, etc. If we are talking about the crystalline solids and amorphous solid, तो as I already told you, मैंने अभी last figure में भी दिखाया था कि सिलिका और ये है आपका सिलिकॉन ग्लास, silicon dioxide, quartz जिसे हम कहते हैं. In this one it is having a crystalline solid, whereas in that one having a it is having a amorphous solids. बेटा क्लेवेज प्लान का भी बता देती हूँ. जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये अपने को क्या कर देगा, स्मॉल क्रिस्टल्स में चेंज कर देगा जो कि सेम साइज और शेप के होंगे एज दैट ऑफ ओरिजिनल वन एज शोन इन दिस वन फिगर, कि मैंने प्रेशर डाला और ये एक जो स्मॉल यूनिट जो होंगी वो छोटी छोटी अपने को क्या करेंगी, सेम प्लेन में कन्वर्ट हो जाएंगी, सेम वन में हो जाएंगी. Cleavage plane is basically it is the breaking of a larger crystal into smaller one with identical size and shape. Fine, बच्चे. So plane which contains the direction of cleavage, that is called the cleavage plane. Like as you can see it here, cleavage plane ये रहा बच्चे आपका, जिसमें this one, और ये stress दिया, pressure दिया यहाँ से भी, from another one side also, so repulsion occur, and due to which the plane is cleavage. Okay, now today assignment which is based on this video, that you have to these questions in your chemistry register. Apart from this, there are the in-text questions given in between after this topic of amorphous and crystalline solids of your NCERT book, page number 4. That questions also you have to do it in your notebook. So go through all these questions I have already discussed with you, and go through the topic again from your NCERT book. So till that time, thank you.